है कोई। दिल हमारा एक है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। आन देश की शान देश की हम संतान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। The Indian Independence Day is a profound reminder of the sacrifices made for our freedom and the enduring spirit of a united India. As we mark the 79th year, let's feel immense pride in our journey and deep gratitude for those who fought for our nation's bright future. We humbly invite our Honorable Chief Guest, Deputy Commandant Satar Khan Sir BSF and Guest of Honor Mrs. Meena Mehra Ma'am, accompanied by Reverend Sisters, to hoist the national flag. Is our heritage, peace is our pride, faith is our flame. A very good morning to our Honorable Chief Guest, Deputy Commandant Satar Khan Sir, BSF, and Guest of Honor Mrs. Meena Mehra Ma'am, our Principal, Reverend Sister Juliana Fernandez. 39th Independence Day, we are gathered here to commemorate a day that holds an everlasting place in our national memory, because this was the day when modern India took birth. Let's start this blissful morning by offering our prayers to the Supreme Power, asking our Heavenly Father to continue to bestow His blessings upon our Mother India. I now call upon the students of primary section to come and conduct the prayer service. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living? A grand welcome to all the Indians present here. I am proud to be one of you. We have gathered here to celebrate the spirit of our freedom and that defines our great nation. As we pray together, remember that though we come from different faiths, we are united in one dream, a peaceful, just and prosperous India. Let us now listen to the sacred words from different holy scriptures, reminding us of our shared values of peace, justice and love. A reading from the Holy Bible, Galatians chapter 5, verses 13 and 14. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge flesh, rather serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command: love
your neighbors as yourself. A reading from the Bhagavad Gita, chapter 2, verse 47. You have the right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Perform your duty with dedication and let not the results disturb your mind. A reading from the Holy Quran, Surah Al-Hujurat, chapter 49, verse 13. O human beings, we created you from a single pair of a male and a female, and made you into nations and tribes so that you may know each other. Verify, the most honored of you in the sight of God is the most righteous of you. A reading from the Holy Guru Granth Sahib, page 1299. All human beings are the same. It is through deeds they are distinguished. There is only one Father of all, and we are all His children. In diversity, let us honor our nation not just by words, but by the way we live in harmony, peace, and faith in one another. As we place our petitions at the feet of our Almighty, your response will be, Heavenly Father, we pray for our beloved nation that it may continue to grow in peace, prosperity, and harmony. Bless the leaders of our country so that they may be guided by wisdom and justice. Your response? Dear Lord, bless our all the soldiers, doctors, teachers, and workers who serve our country selflessly for the poor, the marginalized, and the oppressed, that they may find justice and dignity. Your response? Grant us wisdom to build a nation that honors you. God of all creation, bless our loving India. Guide her people with your light. Fill our hearts with peace and truth. Make us strong in unity and faithful in our duty. We humbly ask you to grant harmony, faith, and peace to our nation. Your response? Grant us wisdom, Lord, to build a nation that honors you. Now, let's say the most powerful prayer that Jesus Himself taught us. Today, we are here to realize what truly makes India shine, not just by its colors or festivals, but by the values that burn bright in our hearts. Let's watch a skit on the story of 4 virtues that keep India glowing even in the darkness. I am harmony. I live in the laughter of different languages, in the meals we share, and in the songs of many faiths. I remind people we may be different, but we are one. I am peace. I walk silently into homes where hearts forgive. I am the silence after a storm and the handshake after a fight. I remind people calm minds build strong nations. I am faith, not just in God, but in goodness, each other, and in tomorrow. I whisper, even in the darkest night, the sun will rise. I am unity.
unity, the invisible thread that binds over the billions of hearts, different languages, different customs, different dreams, but one soul, India. Nirja Bhanot was an Indian flight person. On 5th September 1986, she saved a large number of passengers on board, hijacked by 4 terrorists. They held guns, people screamed, but she followed her duty first. Before the bullet hit her, she had led 359 people out safely. Colonel Sofia Qureshi played a key role in Operation Sindoor by briefing the official media along with Wing Commander Vyomika Singh, who announced the details of the counter-terrorism operation. मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन उससे पहले एक भारतीय हूँ। मेरा मजहब मुझे मोहब्बत सिखाता है और मेरी वर्दी मुझे वफादारी। आतंकवादियों का कोई डर नहीं होता। हर एक आतंकवादी को अपने हाथों से मारने का जिगरा रखती हूँ मैं, वो भी बिना मजहब पूछे। I forgot that faith is not meant to divide but to unite. We are all children, equal to this holy land. You bled for all of us, Ma, and we only view with our differences. You are the colors of my flag, different yet beautiful. Only when you are together. Let harmony be your song, peace be your path, faith be the flames you carry forward, not in hatred but in hope and oneness. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Call upon Ma'am Sinu Joseph to kindly come and give welcome address. True patriotism is not just loving your country in words, but serving it with your heart and passion. Respected Chief Guest, Deputy Commandant Satar Khan Sir, our esteemed guest of honor, Meena Mehra Ma'am, Principal Reverend Sister Juliana Fernandez, Reverend Sister Mary Matthews, the Manager Sophia School, Reverend Sister Monica, Reverend Sister Isabel,
learned teachers and dear students. A very proud and patriotic good morning to all. On this auspicious occasion of our 79th Independence Day, as we gather to celebrate the spirit of freedom and pay tribute to our nation's heroes, we are truly privileged to welcome two distinguished personalities who have made remarkable contributions in their respective fields. Today, we are greatly blessed to have among us a brave protector of our borders and a dedicated mentor shaping young minds. Deputy Commandant Satar Khan Sir and Meena Mehra Ma'am, on behalf of Sophia Senior Secondary School, Bikaner, it is our honor to welcome you both to today's Independence Day celebration. Your gracious presence has added immense significance to this special day. Deputy Commandant Satar Khan Sir, our honorable chief guest today, is a true patriot who has served with distinction in both the Border Security Force and the elite National Security Guard, a most prestigious commando force also known as the Black Cat Commandos. Having commanded a BSF company in the challenging terrain of Jammu Kashmir and being honored by the Director General of Jammu Kashmir Police, BSF and NSG, he personifies the courage and dedication of our armed forces. Sir, we are truly honored by your gracious presence today here in our school. Mrs. Meena Mehra Ma'am, our guest of honor, is an accomplished educator whose inspiring journey began on 16 February 1966 in Bikaner. After completing her education from the prestigious institutions like Sri Gurudwara School, Lady Algin Government School, Maharani Sudarshana College, and earning her B.Ed and Masters in Sanskrit, she has devoted over 3 decades to nurturing young minds. First at Montessori Secondary School and currently at Sophia Senior Secondary School since 2002. Ma'am, it's a pleasure to have you as a guest of honor. Today, as we stand under the tricolor, we are reminded that India's strength lies both its protector and in its builders. In Deputy Commandant Satar Khan Sir, we see the valor that keeps us safe, and in Meena Mehra Ma'am, we see the wisdom that builds our future. On this Independence Day, let us draw inspiration from both our distinguished guests, one who defends our nation's border and another who nurtures its future citizens. Their presence today make our celebration truly meaningful. Can we have a big round of applause for our guests? I now request Reverend Sister Mary to welcome our honorable chief guest with a bouquet. Thank you, Sister. I request Reverend Sister Principal, Sister Juliana Fernandez, to present a memento to our honorable chief guest as a token of appreciation. Can we have a huge round of applause? Reverend Sister Isabel, to welcome our guest of honor, Mrs. Meena Mehra Ma'am, with a bouquet. Token of a love. Can we have a thunderous round of applause as we welcome our guest? Music has the power to evoke patriotism and unity. So let's tune into the rhythm of patriotism. I welcome the students of class 7th A to sing and celebrate our nation's pride. तुझी से पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद
के कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। वतन की मोहब्बत में खुद को दबाए बैठे हैं हम, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं हम। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष्य बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष्य बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे तो प्राण दे, तो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे तो प्राण दे, तो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। जीवन दी अवश्य नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, यहाँ के आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जान का हो दान, आज एक धनुष्य बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। Now we have Karuna of class 5th D voicing her thoughts on this auspicious day through a speech. आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली यह आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। ना तन से प्यार है ना धन से प्यार है, हमें तो सिर्फ अपने वतन से प्यार है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, आज के मुख्य अतिथि, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज हम भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह सिर्फ एक जश्न नहीं, यह उस आग की याद है जो शहीदों की रगों में लहू बनकर दौड़ी थी। यह वो दिन है जब एक आवाज उठी थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और लाखों जानें कुर्बान हो गई थी। जिनकी लाशें खुद इतिहास ने अपने कंधों पर उठाई थी, उन वीरों की कहानियां हवाओं ने भी गाई थी। साथियों, क्या हम कुर्बानियों की कीमत समझ पाए? हम आजाद हैं, लेकिन क्या गरीबी, बेरोजगारी, नफरत, जातिवाद से आजाद है? मुकम्मल आजादी तब होगी जब भूख नंगी ना होगी, बेटियों की आंखों में डर नहीं, उजाले होंगे। हमें सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, अंदर बैठे दुश्मनों से लड़ना है। अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गंदगी, नफरत, यह सब आपके शत्रु हैं। हर पीढ़ी को एक जंग लड़नी पड़ती है, तब
जाकर मुल्कों की हिफाजत होती है। तो आइए आज हम शपथ लें कि हम नफरत को हराएंगे, हम जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का झंडा लहराएंगे, हम देश के लिए जिएंगे और जरूरत पड़ी तो हंसते हंसते कुर्बान भी हो जाएंगे। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अब मैं मेरी मन की बात आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। वो देश जो 7 समुद्र पार प्रदेशों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता है। यही प्रेम पूजे की भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आज उन शहीदों को मैं सलाम करती हूँ जिनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। आज उन सैनिकों को मैं नमन करती हूँ जो इस वक्त भी सीमा पर तैनात हैं। तो आइए आज उन सब के सम्मान में पूरे जोश के साथ एक स्वर में बोले, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। धन्यवाद। So get ready to sink into the depth of dance, music and patriotism with the students from kindergarten. I'm from Alleppey, I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattivar, I'm from Srinagar. My name is Nattivar, I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Shubhrata, I'm from Kolkata. My name is Shubhrata, I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara, I'm from Vadodara. But I'm just like you. My name is Arundhati, I'm from Guwahati. My name is Arundhati, I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin, I'm from Panjim. Benjamin, I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai, I'm from Chennai. My name is Rani Mai, I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. I am Gulvinder from Chandigarh. Aha, 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 aha.
Honorable Chief Guest, Deputy Commander Satar Khan Sir, BSF, our Guest of Honor, Mrs. Meena Mehra Ma'am, our Principal, Reverend Sister Juliana Fernandez, Reverend Sisters, teachers, and my dear friends. They say a nation is built on bricks. I say it's built on stories. Stories of courage, of sacrifices, of voices that refuse to be silenced. Long before we had a flag to salute or an anthem to sing, we had a dream whispered in secret meetings, shouted in protest marches, written in prison cells, and carried into battlefields. A dream that one day we would be free. And today, we stand here because they believed when no one else did. But independence is not a relic locked in the past. It's a living force. It lives through us. It lives in how we treat each other, how we protect the truth, and how we fight. Not with weapons, but with words, with unity, and with unshakable integrity. We are the hires of freedom, but what are we doing with it? Are we using our voices to build or to blame? Are we solving problems or becoming a part of them? Because the legacy of our heroes does not rest in statues or slogans. It rests in our actions. This Independence Day, let's honor their sacrifices, not with words, but with courage. Let's make sure our generation is remembered, not for what we inherited, but for what we stood for. Let's carry the torch forward, brighter, bolder, and stronger than ever. Remember, freedom is never dear at any price. It is the breath of life. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. Get ready to be mesmerized as we invite the students of class 4th C to come forward and present a melodious song. Let's encourage them with a huge round of applause. Guest to kindly come and enlighten us with his inspiring words. Sir, we humbly request you to kindly stay back on stage after your address, as we would be honored if you could personally give away the prizes to our talented students who have achieved remarkable success in various state level tournaments. Jai Hind. Today's guest of honor, Meena Mehra Ma'am,
Reverend Sister Principal, Sister Juliana Fernandez, Reverend Sister Manager, Sister Mary, Reverend Sister Manager, Reverend Sister Primary in charge, Sister Isabel, Reverend KT in charge, Sister Monica, teachers, management, and the future of our country sitting in front of me, dear children. Today it gives me immense pleasure being here and celebrating 79th Independence Day, being in Sofia, and for this I'm really grateful and thankful to Sister Principal for this inviting me on this occasion. This freedom, these days, and the past of what has gone and how we have achieved this, and what presently we are celebrating, you have all shown on the stage. I thank you all the teachers who have worked hard behind this program. Freedom, it was not just a game or we are thinking, it's like feeling, if you can feel like how we got it. It was if you feel like Operation Sindoor was just conducted, we all seen. Now you can imagine how we got the independence. It was just for approx 5 days or 1 week. Operation is gone and it's been over also. And it was long time our freedom fighters fought for us, for our future, for our country. उन्होंने अपने शरीर पर लाठियां खाई, उनको फांसियां हुई, वो कई दिनों तक जेलों में रहे, चाहे वो भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय हो, जगत चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने हमारे लिए अपनी जानें दी, अपनी जानें कुर्बान की। उनको पता था कि हमारा जो भारत का भविष्य होगा वो हमें एक दिन याद करेगा और हमेशा याद करेगा। और जैसा आपने यहाँ पे शौक किया, वो ट्रूली उनको एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने हमारे लिए अपनी रातें और अपने दिन कुर्बान किए, अपने बेटे कुर्बान किए। उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। वी शुड इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड वी शुड पास इट टू आवर नेक्स्ट जनरेशंस, so that they should remember how we got and how we should live and what we should do and what we should do for better future of our country. It's a national festival like your song. There are so many states, we have so many religions, regions, caste, creed. We have so many festivals also. But this festival is a one single festival, and our Republic Day also. The post festival we celebrate across the country, across the religions or the regions. This is the national festival. We all celebrate even in the Kerala, Kashmir, whether in the Assam, Arunachal Pradesh or Rajasthan or Gujarat. In the same is separate, and we always remember on these days our freedom fighters, our martyrs. हमें ये जरूरी नहीं है कि हम कितना लंबा जिए, हमें ये है कि हम उस लाइफ को कैसे और किसके लिए जिए। जब हमारा ये मकसद हो जाएगा कि हमें अपने देश के लिए जीना है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करके जाना है। अदरवाइज तो हम आते हैं और बहुत चले जाते हैं लोग, बट हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ सोच के, कुछ मिशन लेके आप चलना है कि आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 25 ईयर्स जब यहाँ से पास आउट होंगे, हम लोग कहाँ पे जाएंगे और हम कैसे अपने साइंस टेक्नोलॉजी में या कंट्री के जो फोर्सेस है उनमें कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड वी विल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। वी मस्ट थिंक अबाउट आवर कंट्री। आवर इंटरेस्ट हैज ऑलवेज बीन इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर इंडिया, आवर कंट्री, आवर नेशन। हमारा जो देश है वो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे देश की कैसे मैं बेटर सेवा कर सकूं, और मैं कैसे अपनी, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे मेरा गांव हो, चाहे मेरा सिटी हो, उनको मैं कैसे मोटिवेट करके, कैसे ग्रुप बना के, कैसे मेरे देश की तरफ और देश की प्रगति में एक भागीदारी सुनिश्चित करूं, ये हमें सबको महसूस करना होगा। और मैं जानता हूं कि आप सॉफ्टवेयर बहुत बेहतरीन स्कूल है, और इस स्कूल से आप जो भी जितने स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट होते हैं वो ये भावना लेकर जाते हैं कि मैं अपने देश के लिए, मैं अपने राष्ट्र के लिए कैसे एक
अलग जगाऊंगा, कैसे दूसरों को मोटिवेट करूंगा, और कहीं भी रहूंगा वो अलग से दिखेगा कि ये सोफिया स्कूल का स्टूडेंट है और ये देश के लिए एक हमेशा तत्पर है, राष्ट्रभक्ति में लीन है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पुराने टाइम में भी बहुत अच्छा था। You must have heard about the Nalanda, Takshila universities, and I heard, even read somewhere that the Chinese, one of philosophers has said that India was dominating us in culturally without sending even a single soldier. India's culture very rich, and Chinese were having coachings like we are having today for NEET, JEE. Like this, they were having coachings for entrance exam to clear in our universities and Indian universities. Now you can think what was our education system and how we are giving values to them. Our training, like we being a forces, in the forces, or each and every soldier is being trained in the same level, at the same parallelly, even in the arms, weapons, or fighting, or whatever our traits are. They are always been trained in the same level. क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक भी किसी को अगर कम ट्रेनिंग देंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि किसी बेटे के या किसी बेटी के साए से उसका हाथ उठ जाएगा, किसी महिला कोई विधवा हो जाएगी, कोई माँ बाप का साया उठ जाएगा, कोई माँ बाप की सहायता नहीं रहेगी। इसलिए हम उनको ऐसा ट्रेन करते हैं कि बॉर्डर पे जाके चाहे कहीं भी लड़ना पड़े उसको, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पांव पीछे रख दे या अपने अपने योग्यता के अंदर में कोई कमी आ जाए उसके अंदर में। मैं आशा करता हूं कि इसी ट्रेनिंग और इसी भाव से आप अपने टीचर्स यहाँ पे जो है बहुत रिस्पेक्टेड है, दे आर वेरी लर्न टीचर्स, कि वो इसी भावना से हर बच्चे को ऐसे पढ़ाते होंगे कि मेरा बच्चा दूसरे स्कूल का जो फर्स्ट बच्चा है वैसा मेरा बच्चा वहां जाएगा तो वहां के जो फर्स्ट बच्चा रहेगा, मेरा चाहे लास्ट बच्चा हो या पहला बच्चा हो, हमारे एक ही पैरेलल में हम एजुकेशन देते हैं। एंड सोफिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड वेरी स्कूल इज रिस्पेक्टेड स्कूल एंड इवन इन द नॉट ओनली इन द बीकानेर, इट्स इन होल इंडिया। सो हमारे जो बच्चे हैं वो इस हिसाब से आई एम रियली प्राउड बीइंग ए पेरेंट्स ऑफ सोफियास एंड कनेक्टेड, आई एम प्राउड टू बी कनेक्टेड ओवर हियर इन द सोफिया। आपका जो सेल्फ स्टीम है, मनोबल है, वो हमेशा ऊपर होना चाहिए, चाहे हम किसी भी लेवल पे हो। इवन अगर एक सोल्जर अगर प्रोटेक्ट कर रहा है या वहां लड़ रहा है बॉर्डर पे या यहाँ पे सिविलियन से, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो, आपका सेल्फ स्टीम जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। When Dr. APJ Abdul Kalam became president, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूं एंड आई विल मीट सो मेनी पीपल्स, सो मेनी यंग माइंड्स एंड द बेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, लाइक बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट पॉलिटिशियंस, बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, बेस्ट टीचर्स, एंड यू नो बेटर ही वाज बेस्ट टीचर आल्सो, ही वाज टीचिंग टू चिल्ड्रन वेयर ही गोज। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट बने, उनकी जो टेबल थी उनके पीछे में उन्होंने एक इमेज लगाई, बड़ा सा इंडिया का मैप। तो जब भी कोई बहुत ही बेहतर, बहुत ही पर्सनैलिटी जब जाते थे उनके सामने बैठते थे, वो सीधा बोलते थे, कैन यू सी बिहाइंड मी हाउ दिस लुक, आई ब्रॉट इट फ्रॉम जर्मनी। तो बोलते वाओ फ्रॉम जर्मनी, इट्स वेरी गुड। तो बोले जाओ नजदीक में जाके थोड़ा देख के आओ उसको। जब वो जाते थे तो उसमें लिखा होता था, वी आर थैंकफुल टू इसरो त्रिवेंद्रम इंडिया फॉर दिस पिक्चर। वापिस जब आते थे उनसे पूछते थे, बोला उन्होंने पढ़ा? बोला हाँ पढ़ा। क्या सही में सच है क्या ये? इज इट? मतलब इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं, जैसे इंडिया का नाम आ गया उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? जर्मनी कैसे इनको थैंक्स बोल रहा है? दिस इज, हमें कॉन्फिडेंस, हमारा जो विश्वास है वो होना चाहिए कि नहीं, इंडिया बेहतर कर रहा है और बेहतर किया है, एंशिएंट टाइम से भी किया है और अभी भी कर रहा है और आगे करेगा, क्योंकि आपके जैसे टीचर्स है, आपके जैसे स्टूडेंट्स है, इससे कोई रोक नहीं सकता इंडिया को आगे बढ़ने से। मैं लास्ट में सबसे ज्यादा थैंक्स बोलूंगा ऑल सिस्टर्स एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एंड इट वाज रियली गुड टू सी योर मार्च पास। बहुत अच्छा किया आपने, and your program was awesome. It was shown India over here on the stage I've seen, and I was discussing with sister principal also. It is really good and thank you for inviting me over here. अंत में मैं कहूंगा कि है युवा तू आशा है माँ बाप के अरमान की, है युवा तू आशा है अरमान
की तो जिंदा कहानी है शौर्य और स्वाभिमान की। हे युवा, तू अपनी ताकत की पहचान कर, क्योंकि तू जीती जाती है तस्वीर इस हिंदुस्तान की, तू जीती जाती तस्वीर है इस हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। दिल थाम के जहां देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियां, करके दिखा कमाल वो आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 शाबाशियाँ। टीचर, स्वतंत्र का क्या मतलब होता है? 1947 से पूर्व पराधीनता का समय था, जब हमारा देश ऐसी दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब चारों तरफ कुरीतियां जैसे कि पर्दा प्रथा, सती प्रथा, लिंग भेद आदि से अफरा तफरी मची हुई थी। परंतु आज हम स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, डिजिटल इंडिया आधार अभियान, विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली और कोविड-19 वैक्सीन निर्माण जैसी कई उपलब्धियां हासिल की है। तो आइए आज हम कक्षा 8वीं वर्ग की छात्राएं आजादी के इस युग परिवर्तन को एक नृत्य के द्वारा दर्शाने का प्रयास करते हैं। हमें देखनी है आजादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आजादी।
Now, I humbly request our principal, Reverend Sister Juliana Fernandez, to come and inspire us with your words of wisdom. A very good morning to our esteemed chief guest, Mr. Sattar Khan, the Deputy Commandant from the Border Security Force. Guest of honor, Mrs. Meena Mehra, Reverend Sisters, teachers, dear students, and all present here. Today, as we gather to celebrate the 79th Independence Day of a beloved nation, our hearts are filled with pride and gratitude. 79 years ago, on 15 August 1947, India awoke to the dawn of freedom. A freedom earned through sacrifice, courage, and determination of countless men and women who dreamed of a sovereign nation. Independence, not just a date in history, it is a living responsibility. It calls us to uphold unity, equality, justice, and progress. It reminds us to respect our diversity, to act with honesty and courage, to protect the freedom we enjoy, and to work for the welfare of the weakest among us. True independence is when every citizen feels safe, valued, and free to dream, and when each of us contributes selflessly to the growth of our nation. We are deeply honored to have among us today Mr. Sattar Khan, the Deputy Commandant, representing the Border Security Force, the brave men and women who guard our frontiers with dedication and courage, ensuring that we enjoy the peace and freedom we celebrate today. Sir, your presence inspires us and reminds us of the sacrifices our armed forces make each day for the nation. In the days leading up to this celebration, our school has been alive with excitement and patriotic fervor. Numerous competitions and activities were organized for our nursery, PG, primary and secondary students. These were not merely contests, they were opportunities for our children to express their love for the nation. Over many days, these preparations have filled our campus with zeal, creativity, and the vibrant colors of our national pride. Today's program began with a moving praise service, beautifully portraying the love we hold for our motherland, followed by performances that were both creative and inspiring. The dedication, discipline, and enthusiasm of our students have been truly commendable. Such an outstanding celebration is the result of the tireless efforts of our teachers in charge and the wholehearted participation of our students. To each one of them, I express my deep appreciation. As we rejoice in our freedom, let us remember that patriotism lies not in words alone, but in our actions, in the way we respect one another, serve our communities, and contribute to the progress of our country. Let the spirit of this day inspire us to be responsible citizens who cherish our freedom and work together for a better India. On the 79th Independence Day, let us stand united and proudly say, Jai Hind. Thank you. Thank you, sister, for inspiring words. I now request Ma'am Saranda Tawar to come and give a vote of thanks. Some nations are built by rulers, but ours was built by the courage of its people. Today, as the tricolor flutters high, we gather to salute the spirit of India. Respected principal, honored guests, dear teachers,
and my beloved students. On this glorious morning of our nation's Independence Day, as the air is filled with the colors of our tricolor, the rhythm of patriotic songs, and the pride of being Indian, it is my proud privilege to extend a heartfelt vote of thanks. First and foremost, our deepest gratitude to our Chief Guest, Deputy Commandant Mr. Sattar Khan of the Border Security Force Bikaner, whose presence has brought the spirit of courage and service into our celebration. Your words will surely inspire our young minds to love and serve the nation. We also warmly thank our guest of honor, Ms. Meena Mehra, for joining us and encouraging our students. A very special and heartfelt thanks to our principal, Reverend Sister Juliana Fernandez, whose visionary leadership, constant encouragement, and commitment to excellence make every celebration possible. Sister, your dedication not only inspires the staff but also sets a shining example for our students to dream big and work hard. Our sincere gratitude also goes to our manager, Reverend Sister Mary, whose steady guidance and unwavering support form the backbone of our school's smooth functioning. Special appreciation to our primary in charge, Reverend Sister Isabel, and KG in charge, Reverend Sister Monica, for shaping the foundations of our students with care and dedication. A big thank goes to all the teachers and the students who have brought life, color, and meaning to today's program. At last, but not the least, I sincerely thank our supporting staff, the technicians, the computer and the sound and mic in charges. Thank you for your tireless efforts and teamwork behind the scenes. On behalf of the whole fraternity, I thank each one of you for making this celebration a true tribute to our nation. Let us carry forward the spirit of unity, courage, and responsibility. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Filled with zest and zeal of patriotism, we remember the bravery and sacrifices of the freedom fighters who fought tirelessly for our nation's independence. Our students reminded us that patriotism isn't just about remembering the past, but about living with purpose, unity, and respect in the present. We would always have reverence and respect for the brave soldiers who laid down their lives for our nation. आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि देशभक्ति केवल एक दिन की भावना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। 15 अगस्त के दिन हम सबका यही प्रण है, अपने जीवन से ज्यादा प्यारा भारत का गणतंत्र। We wish you all a very happy Independence Day. Jai Hind,